to my channel Maths World. In this video also we are going to continue with the 8th standard chapter 1 rational and irrational numbers. Before starting with the chapter, let us learn some basic concepts and basic rules for comparing rational numbers. Today we are going to learn subtopic comparison of the rational numbers. That means how to compare the rational numbers. Okay, so first rule is given over here. If the numerator and the denominator of a rational number is multiplied by the non-zero number, then the value of the rational number does not change. That is, if I have a rational number a upon b, and if I multiply the numerator and the denominator by any non-zero number, then the value does not change. Value remains the same. If I have example 5 upon 2, and if I multiply 5 by 3 and also 2 by 3, the whatever answer I get, 15 upon 6, it is same as the 5 upon 2. That means 5 upon 2 is equals to 15 upon 6. The value does not change. Why value does not change? Because अगर 15 upon 6 को again मैंने 3 से divide किया, 3 5s and 3 2s, so मुझे आंसर 5 upon 2 ही मिलने वाला है. वैल्यू रिमेन्स द सेम एंड दैट ओनली द रूल सेज. अगर मेरे पास न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है, एंड इफ आई मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, देन द वैल्यू रिमेन्स द सेम. वैल्यू डज नॉट change. Second, we have for any pair of numbers on a number line, the number to the left is smaller than the other. If I have a number line, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे all we have positive numbers, यहाँ पे we have the negative numbers. The according to second rule, whatever number which is on the left is always smaller than the other. मतलब जो left hand side नंबर लाइन पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे रूल है, दैट इज ऑलवेज स्मॉलर दैन दी अदर. मतलब जो राइट हैंड साइड पे नंबर होगा उससे. ओके, मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास है -2 एंड यहाँ पे है 1, सो -2 इज ऑलवेज स्मॉलर दैन दी 1. इफ आई हैव -1 ओवर हियर एंड -2 इज left to the -1, that means -2 is smaller than the -1. On the number line only, whatever number is on the left hand side is always smaller than the other. Last, a negative rational number is always less than a positive number. That we all know कि negative numbers are always less than the positive numbers. So same rule is applied for the rational number also. Negative rational number is always less than the positive numbers. For example, -2 upon 4 is less than 4 upon 7. -2 upon 4 is the negative number. 4 upon 7 is the positive. So -2 upon 4 is less than 4 upon 7. Understood all the three rules? Again we will revise. First one, if the numerator and the denominator of a rational number is multiplied by non-zero number, then the value of the rational number does not change. Second rule, for any pair of numbers on a number line, the number on the left, what I said, the number on the left is smaller than the other. Next one, a negative rational number is always less than the positive number. Next, we have some rules which are useful to compare two rational numbers. The following are rules to compare the rational numbers. Okay, if a upon b and c upon d are rational numbers, if a upon b and c upon d are rational numbers such that b and d are positive, what I said, b and d are what? Positive. Then, if a into b, if a into d is less than b into c, if a into d is less than b into c, then a upon b is less than c upon d. मतलब ये कुछ ऐसे हैं. सपोज मुझे कंपेयर करना है फ्रैक्शन 2/3 and 4/9. I have to compare these two fractions. So what I do,
मैं इसको सपोज a अपॉन b कंसिडर करती हूँ। अकॉर्डिंग टू ये रूल अगर हम लोग जाए, ये मेरे पास फ्रैक्शन है a अपॉन b, ये है c अपॉन d। सो ये फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, a इंटू डी। कहाँ पे है a, ये a है, एंड d मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 9, एंड सेकेंड क्या है b इंटू सी। b इंटू सी मतलब ये यहाँ पे क्रॉस में जाएगा, b इंटू सी मतलब 4 इंटू 3। So 2 into 9 is 18, 4 into 3 is 12. So इसमें 18 is greater than 12. Okay, that means 2 upon 3 is greater than 4 upon 9. 2 upon 3 is greater than 4 upon 9 according to ये rule. Okay, सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, इफ़ a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, मतलब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये अगर इक्वल आया देन बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्वल। एंड लास्ट रूल, इफ a इंटू डी इज ग्रेटर देन b इंटू सी देन a अपॉन b इज ग्रेटर देन c अपॉन d। ये तीन रूल्स कहाँ पे अप्लाई होंगे, जब वी आर गोइंग टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स, जो आगे प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे। इफ़ वी वांट टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स देन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस रूल्स। Next, one more rule we have to compare to negative numbers. If we want to compare to negative numbers, then what we will do? If a and b are positive numbers such that a is less than b, then minus a is greater than minus b. Suppose a and b 2 and 3 को ले लो. Okay, so if a and b are two positive numbers such that a is greater than b, यहाँ पे 3 is greater than 2 है, then क्या हो रहा है, उनके जो अपोजिट है उनमें कंपैरेटिव अपोजिट हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर a इज़ लेस दैन b है, सो यहाँ पे माइनस a इज़ ग्रेटर दैन माइनस b है। सो मतलब यहाँ पे क्या होगा, -2 इज़ ग्रेटर दैन -3। ये आप लोग नंबर लाइन पे भी वेरीफाई कर सकते हो। ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 -2 -3 है। -2 -3 से ग्रेटर है, वाई, बिकॉज ये जो -3 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे है ऑन द नंबर लाइन, जो रूल हम लोग ने ऑलरेडी लर्न किया है। कौन सा वाला, ये सेकेंड, फॉर एनी पेयर ऑफ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन द नंबर टू द लेफ्ट, जो नंबर है लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर दैन दी अदर। जो लेफ्ट पे नंबर है दिस इज ऑलवेज स्मॉलर दैन दी अदर। सो यहाँ पे -3 इज ऑलवेज स्मॉलर दैन -2, जो इससे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, compare the following numbers. So first question we have -7 and -2. Now students, here we have various method to solve this practice set. ये दो numbers को compare करना, ये already we have studied in the 6th standard how to compare the negative numbers, है ना। So यहाँ पे -7 है, -2 है, so which is the bigger number over here, -2 obviously. Okay, so let us write -7 is less than -2 or -2 is greater than -7. Why? Because we can write the reason. What is the reason? जो rule हम लोग ने learn किया था, for any pair of numbers on a number line, the number to the left is always smaller than the other. Now second example, 0 and -9/5. We have to compare between 0 and -9/5. So यहाँ पे reason क्या आएगा, okay, between 0 and -9/5 which one is the greater? Obviously 0 is the greater. Why? Because on a number line -9/5 is to the
लेफ्ट ऑफ 0 है ना। -9/5 ये नेगेटिव नंबर है, सो ये कहाँ पे आएगा, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे। सो ऑन अ नंबर लाइन -9/5 इज टू द लेफ्ट ऑफ द 0, सो हेंस 0 is greater than -9/5. Third example we have 8/7 and 0. So यहाँ पे solution on the number line eight upon 7 is to the right of 0, or we can say that on a number line 0 is the left of 0. मतलब ये number line है, ये 0 है, 8/7 is the positive, so वो कहाँ पे आएगा, right hand side पे आएगा. So 8/7 is to the right of the 0. कहाँ पे है ये number, right पे है, and which is always greater than the number which is on the left hand side. यहाँ पे कुछ 8/7 आएगा, 0 लेफ्ट हैंड साइड पे है, 8/7 राइट हैंड साइड पे है, सो 0 क्या होगा, स्मॉलर दैन दी 8/7, सो हेंस 0 इज लेस दैन 8/7. Fourth example we have -5/4 and 1/4. We have to compare between -5/4 and the 1/4. So solution we have, so यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे -5/4 इज द नेगेटिव नंबर एंड 1/4 इज ए पॉजिटिव नंबर. सो ऑब्वियसली यहाँ पे बिगर वन कौन सा है, 1/4. सो यहाँ पे लिखेंगे अ नेगेटिव नंबर is always smaller than a positive number. That we all know, जो हम लोग ने अभी रूल्स लर्न किए उसके अकॉर्डिंगली क्या है, नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर दैन द पॉजिटिव नंबर. सो यहाँ पे -5/4 इज लेस दैन 1/4. Next example we have 40/29 and 141/29. Now here both examples, both the rational numbers are positive rational number, and here we have to compare the positive rational number. So now how to compare? Okay, normally जहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स कंपेयर करते हैं बिटवीन 4 and 9, which one is the greater, whatever is the bigger that one is the greater number, 9 is the greater than the 4. Here is also, while comparing two rational numbers which are positive, always we have to check what is the denominator. So in both the rational numbers, denominator is what, 29, so denominator is same, then only we can compare the rational numbers. ये हम लोग ने already previous standard में learn किया है while comparing the rational number. In 5th standard we have studied this कि while comparing two rational number we want the denominator same. So here is denominator same, yes, denominator is 29. So now we can compare the two rational numbers by comparing the numerator. So यहाँ पे हम लोग लिखेंगे the denominator of the given rational numbers is the same. Denominator of the rational numbers are same, hence we are going to compare the numerator. So यहाँ पे numerator क्या क्या है, 40 and 141. So between 40 and 141, 141 is the greater, so hence 40/29 and 141/29 में से 141/29 is the greater. So in that way we have to solve the example. Now next question, question number 6, -17/20 and -30/20. In this question we have two negative rational numbers,
So we have to compare two rational numbers. So first of all, what we are going to check, what is the denominator. What is the denominator over here? 20, which is the same. So we are going to compare the numerator. So यहाँ पे लिखेंगे the denominator of given rational numbers is the same. डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. हेंस वी आर गोइंग टू कंपेयर द न्यूमरेटर. नाउ यहाँ पे बोथ आर द नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स है. सो वाइल कंपेयरिंग नेगेटिव नंबर, विच वन इज ग्रेटर, -17 और -13? ऑब्वियसली -13 इज ग्रेटर दैन द -17. वाई? बिकॉज -13 इज ऑन द राइट हैंड साइड फ्रॉम द ऑफ द -17. सो यहाँ पे -17 upon 20 is less than -13 upon 20. Next question number 7. 15 upon 12 and 7 upon 16. Now here also both are the rational numbers, positive rational numbers. So what we are going to check, the denominator. What is the denominator? 12 and 16, which is not the same. So here what we are going to do, either we are going to use that 3 rules जो हम लोग ने लर्न किए, A and B, C and D, or we will do cross multiplication, make the denominator same, and then we are going to compare. How to make denominator same, ये already हम लोग ने previous standard में लर्न किया है. डिनोमिनेटर सेम कैसे करना है? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो लेट अस मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड देन कंपेयर. सो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 15 अपॉन 12. सो फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकेंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, एंड सेकेंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. So 15 multiplied by 16 upon 12 multiplied by 16. The answer we have 240 upon 192. ये मुझे फ्रैक्शन मिला. एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल जो हम लोग ने ऑलरेडी लर्न किया था, इफ़ आई हैव अ फ्रैक्शन a अपॉन b एंड मैंने a एंड b दोनों को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, द वैल्यू रिमेन्स द सेम. दैट मीन्स 15 अपॉन 12 एंड 240 अपॉन 192 दोनों का वैल्यू कैसा रहेगा? सेम रहेगा. सेकेंड फ्रैक्शन 7 अपॉन 16, 7 को मल्टीप्लाई किया 12 से, 16 को मल्टीप्लाई किया 12 से. द आंसर वी हैव 84 अपॉन 192. सो मतलब यहाँ पे आई वॉन्ट टू कंपेयर बिटवीन 240 अपॉन 192 and 84 upon 192. So between 240 upon 192 and 84 upon 192, which one is the greater? Obviously this is the greater. Why? Because यहाँ पे denominator same है. So we are going to compare what? Numerator. So between 240 and 84, यहाँ पे 240 is the greater. So hence 240 अपॉन 192 कहाँ से मिला? 15 अपॉन 12 से. सो यहाँ पे 15 अपॉन 12 इज ग्रेटर दैन 84 अपॉन 192 कहाँ से मिला? 7 अपॉन 16. सो 15 अपॉन 12 इज ग्रेटर दैन 7 अपॉन 16. ये एक मेथड है, और वी कैन डू इट बाय अदर मेथड ऑल्सो. कौन सा वाला मेथड? वी विल डू बाय यूजिंग दिस रूल्स. मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास दो फ्रैक्शंस है, a अपॉन b एंड c अपॉन d, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वॉट एवर इज़ द बिगर नंबर, दैट फ्रैक्शन इज़ द बिगर वन. सो यहाँ पे ये रूल भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. सो दो फ्रैक्शंस की आई यहाँ पे 15 अपॉन 12, 7 अपॉन 16. 15 upon 12 and 7 upon 16. So let us do cross multiplication. 15 multiplied by 16, 7 multiplied by 12. यहाँ पे हम लोग को दोनों को कंपेयर करना है. 15 इंटू 16 कितना होता है 240 एंड 7 इंटू 12 कितना होता है 84. सो बिटवीन दिस 240 इज द ग्रेटर. दैट मीन्स 15 अपॉन 12 इज ग्रेटर दैन 7 अपॉन
16. You can do by any method, but simply I'll suggest कि go with the cross multiplication method because वो हम लोग को used to है, जो हम लोग ने already किया है. 8th example we have minus 25 upon 8 and minus 9 upon 4. Here is also both are the negative fractional numbers, but the denominator is not same, so we have to make the denominator same by cross multiplication. So first fraction क्या है, minus 25 upon 8 which is going to multiply by 4. so यहाँ पे minus 25 multiply by 4 upon 8 multiply by 4. So 25 4 is 100, so here we get the answer minus 100 upon 32. Next, minus 9 upon 4 which is going to multiply by 8, minus 9 multiply by 8 upon 4 multiply by 8, minus 72 upon 32. So that means we have to compare between minus 100 upon 32 and minus 72 upon 32. Between this, minus 100 upon 32 is the greater. No, minus 72 upon 32 is greater. Why? Because minus 72 upon 32 is on the right hand side from the minus 100. So यहाँ पे minus 72 upon 32 is the greater, and यहाँ पे denominator is already same, so we will compare by comparing the numerators. Hence minus 25 upon 8 is less than minus 9 upon 4. 9th example, 12 upon 15 and 3 upon 5. Okay, so here is also denominator is not same, but we can make denominator same. यहाँ पे already 15 है, यहाँ पे 5 है, so अगर मैं 5 को 3 से multiply करूँ then we'll get 15, है ना. So no need to apply cross multiplication method, we can do it directly also. So यहाँ पे first fraction will remain as it is. Second fraction what we have 3 upon 5. So यहाँ पे 5 को 3 से multiply करना होगा, so obviously 3 is also going to multiply by 3 also. So 3 into 3 upon 5 into 3, that is 9 upon 15. That means we have to compare between 12 upon 15 and 9 upon 15. So between this, 12 upon 15 is greater than 9 upon 15. That is 12 upon 15 is greater than 3 upon 5. Why? Because 3 upon 5 and 9 upon 15 both are same. Last example we have 7 upon 11 and minus 3 upon 4. Here is also denominator is not same, so we have to make denominator same. यहाँ पे देखो कोई denominator automatically same हो रहा है कि नहीं, as like previous example. No, we have to apply the cross multiplication method. So let us take first fraction minus 7 upon 11 which is going to multiply by 4, minus 7 into 4 upon 11 into 4, that is minus 28 upon 44. Second fraction we have minus 3 upon 4 which is going to multiply by 11. So minus 3 multiply by 11 upon 4 multiply by 11, that is minus 33 upon 44. So we have to compare between these two fractions. minus 28. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट डिनोमिनेटर सेम. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होने के बाद ओनली वी कैन कंपेयर. minus 33 upon 44. Denominator is same. Yes, we are going to compare the numerator. So between minus 28 and minus 33, which one is greater? Minus 28 is greater. So minus 28 upon 44 is the greater. So hence minus 7 upon 11 is greater than minus 3 upon 4. Why? Because ये फ्रैक्शन कहाँ से मिला? minus 7 upon 11 से. ये फ्रैक्शन कहाँ से मिला? minus 3 upon 11 से. I hope you understand all the examples that we have solved today. So if you like my video, share to your friends and subscribe to my channel. Thank you.